Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Majid, MPhil Pharmacology and a PhD Fellow and Clinical Pharmacist at the She Pharmacy. I would like to begin the session with the recitation of the Holy Quran. Can you, Ms. Amatul, please? Nimra, please carry on. Carry on. I was waiting for your recitation of the Holy Quran. Can you please start the recitation of the Holy Quran? بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل هو الله أحد. Say, He is Allah, who is one. الله الصمد. Allah, the eternal refuge. لم يلد ولم يولد. He neither begets nor is born. ولم يكن له كفوا أحد. Nor is there to him any equivalent. Jazakallah, Ms. Amatul. Thank you for this recitation. We will move further and please get ready for the national anthem. Thank you so much, Ms. Amatul. I was thinking there was an error in the audio of the national anthem, so it was not listened up to date. We will move further. I would like to begin the session further. Welcome to the second webinar of the platform on the platform of She Pharmacy. She Pharmacy is initiated by the female pharmacist. Our motive is to ensure the proper role of the pharmacist in the healthcare system, as well as we are working really hard in identifying the concrete steps that are required for the growth and the prosperity of the pharmacist. Our ultimate goal is not only to serve the nation through our knowledge and and service, but also to empower women. I feel privileged to be the part of this team, and on the behalf of my team, I would like to welcome all of you in this session without a further delay. Welcome to the second webinar of the She Pharmacy. When we talk about today, as we all know, we are discussing about the Women's Day. As we know, it's a day when everyone shows appreciation, love, and respect toward the woman. A woman is said to be a beautiful creation of God.
It is a fact that all the great personalities are born from the woman's womb and have taken their initial teaching from a woman. And it is why our people give respect to the woman in their lives. Today, on this day, when I talk about the women, who they are, what are their roles, I would not be able to end the session because they are the infinite role of the woman. They are the mothers, they are the homemakers, they are the successful leaders, and so many other roles of the woman. But still, women, so that's why Women's Day is celebrated globally on the 8th March of the everywhere. It's the day of praising women who work hard each day to accomplish individual and the professional goals in her life. Similarly, today on the platform of the She Pharmacy, we 5 founding members of the She Pharmacy are performing the number of roles in this community as a mothers, as a housewives, as a teachers, as a student, and so many are roles of all of us. On the platform of the She Pharmacy, I would like to introduce Ms. Amatul Aziz. She is a founder and the CEO of the She Pharmacy. She is a graduate from the Dow University of Health Sciences and she has done MPhil from the JU Dublin Pharmacy Practice. She has she's also the founder of the She Pharmacy and also worked as a former co-founder at the Digital. For the further delay, I would like to invite Ms. Naya to throw some light on the successful to throw some light on on successful female pharmacists across the globe in the Pakistan. Please, Ms. Nayab. Ms. Nayab is Ms. Dore Nayab is Dr. Dore Nayab. She is a community pharmacist with all of us, and she will put some role of the incredible women which are in the which are the pharmacists and across the globe. Can you please start, Ms. Lorena? Thank you so much, Ms. Nimra. And you please wait for a while. Let me share my presentation with you. Thank you so much for all of us. Please wait for a while. Ms. Nayab is sharing her presentation. Please wait for a while for the Ms. Nayab presentation. First of all, a very happy belated Women's Day to all of you. And we celebrate Women's Day to acknowledge the achievements and efforts of women. So why not we discuss today some of the incredible women that have made an incredible impact globally as a pharmacist. Let me share my PPT with you. Thank you. Thank you so much. Okay. Next, please. Okay. I begin with Ms. Nadia Bukhari. Ms. Nadia Bukhari is a British Pakistani. She has completed her Bachelor's of Pharmacy from United College London. Currently, she is an associate professor
in University College London. And one of the biggest achievements of Miss Nadia Bukhari is that she has received fellowship at Royal Pharmaceutical Society. Basically, this fellowship is given to those people who has acquired some accomplishment and some excellence and some distinction in their career. So it is the biggest achievement of her, and it is a proud moment for a British Pakistan, for a Pakistani woman to receive this fellowship. She is also a board member of National Association of Board of Pharmacy for England. Next. Miss Madiha Malik. Miss Madiha Malik is born and raised in Pakistan. She founded Syntax Health Project in Pakistan. She did her graduation from Pakistan and then she went to Malaysia. She completed her post-graduation there, and then she went to South Africa. She did her postdoctorate in pharmacy there. And she came back to Pakistan and she put the foundation of Syntax Health Project. For those who don't know about what Syntax Health Project is, basically Syntax Health Project provides a platform for clinical trials. It also serves drug regulatory affairs, as well as it provides a platform for pharmaceuticals, biopharmaceuticals, and nutraceuticals to develop their discoveries to new medical treatments. So this is a big achievement and big initiative by Dr. Madiha Malik. She's solely leading this organization, and it is in great favor of Pakistan and in pharmacy community. Maybe in future one of us will put the foundation of this kind of organization, because we need our country need these kinds of organization for more drug development, for innovative treatments. She is also right now she is part of gender equity, and she's an advocate of gender equity. She is an academician and she's also a researcher. So she has done a lot of work, and I can proudly say that Pakistanis and Pakistani pharmacist women are giving a great impact in globally, worldwide. Next, please. Next is Nabila Chaudhary. Nabila is a ex-director of Babylon Health. She is a British Pakistani. And for those who don't know what Babylon Health is, actually, it is a system which ensures and which aims to provide easy accessibility of healthcare system to each and every individual. It is in UK, and Nabila has done a great job in improving the quality of prescribing, including the quality of prescription. She worked along with 300 plus prescribers, and she improved the quality of prescription. She has done antibiotics, the use of antibiotics. She has minimized the use of antibiotics. Like in Pakistan, we are having a lot of misuses and overuses of antibiotics. Country like UK, which is already a developed country, they have a very strict control of medications, antibiotics. There Nabila Chaudhary has done a great job in controlling the use of antibiotics. So this is a very big achievement of her, and right now she has left Babylon, but now she is working as an independent price prescribing pharmacist. Along with her, there are 100 plus independent pharmacists which are working. So we can learn from these kind of ladies that how they are leading their lives successfully and leading their careers successfully and innovating new things to pharmacy community, like independent prescribing pharmacists. She is one of those. So we can be one of those. Next, please. Erin L. Albert, she has done PharmD. She is also a British national, and she has done PharmD, and then she did MBA. She is founder of Pharm LLC, which is a pharmaceutical industry. Then she is working as a vice president at costplusdrug.com. In UK, costplusdrug.com working to decrease the cost of medications.
all over UK, a healthcare system is well established, but still their people are struggling, and they are working really hard to ensure the drug usage, to ensure the easy accessibility of drug uses and proper prices of drugs. This is the basic reasons of prosperity of such countries and growth of the countries. They are continuously working hard for the betterment of their country, and we can proudly say that women are never behind it. They are always at the forefront. She's also enlisted as a top healthcare workers in LinkedIn list. Next, please. Eden Sulzer, she's a director of Women and Pharmacy Initiative at Cardinal Health, and she is also an executive coach with Crosswork. In Crosswork, she did coaching as a career counseling. She does career counseling, and she guides people what suits best about their career, which career suits them best according to their skills and competency and their talent. She guides them. So in other countries, in foreign countries, there are proper channels and proper organization who guides people, who guides youth for their future. So she is one of the coach in these kind of organization. Next, please. Zainab Hussain. Zainab Hussain, when I was going through Zainab Hussain, I feel really proud that she is a hijabi Muslim woman, and she did her pharmacy graduation from UK, and then she did diploma from NHS Academy. In NHS Academy, among 100 students, there were only 4 pharmacists which were doing this diploma, and she was one of those 4 pharmacists. So this is a good and great achievement of her, that she did that. And then currently she's a chief clinical digital officer, and you will be impressed, and you will be also interested to know that this designation has never given to any pharmacist. Prior to her, this designation was always given to doctors. Now she has received this designation, and it is really a good news and hope for pharmacist community, how pharmacists are really getting their place and they're getting the worth they deserve. She also, the one of the biggest achievements of Ms. Zainab Hussain is that she implemented EPMA system in UK. EPMA is basically electronic prescribing medicine administration, where we can have an electronic prescription. So she implemented this system there, and then she was called by Dubai, and in Dubai, in different countries, she implemented this system. So this is one of the outstanding work of Ms. Zainab Hussain, that EPMA implementation of EPMA reduced many flaws and reduced many. It can help in improving the quality of healthcare system a lot. In Pakistan, there is no such system yet. Maybe any of the women like you, any of the women among us in Pakistan will introduce EPMS system. From She Pharmacy platform, we will guide you and we will train you how to use your expertise, how to use your competency, and how to use your skill for the betterment of pharmacy. And we also guide, and we also polish your skills, polish your competencies, and polish your talents. So She Pharmacy is providing training and internships to all the pharmacists for the betterment of pharmacy, for the betterment of country. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Naya. This was a very informative presentation for all of us, and you have worked really hard. Thank you so much. Without further delay, I would like to invite Ms. Sadaf. She will present the topic vitamins and the nutrition supplements for the woman. As we know, vitamins play a very vital role in our life. Vitamins have different jobs to help keep the body working properly. To further explain it
in detail, I will invite Ms. Sadaf Jabin. She is a pharmacy graduate from from the DUHS, Tawkalda Pharmacy. Can you please start, Ms. Sadaf? Over to you. Hello, Assalamu alaikum. I am Dr. Sadaf Jabin, and I am here to talk about essential vitamins or nutrients which are necessary for women. Please wait for a while. Now I'm going to start my talk next. First of all, we have to know what are vitamins. Next, please. Yes. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि vitamins क्या हैं. Vitamins are actually the organic compounds. Means ये organic compounds होते हैं, इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए कभी हार्मफुल नहीं होते, ओनली फायदेमंद ही होते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर गुड हेल्थ. गुड हेल्थ हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेनली वाइटामिन हमारे फूड से हासिल हो सकते हैं. बहुत सारी जितनी भी हमारी ग़िज़ा, हमारी जो खाने वाले ग़िज़ा में शामिल होते हैं, उनसे हम वाइटामिन को हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट, हम यहाँ पर मेनली उन वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे या बताएंगे जिसको जो है. वाइटामिन वुमेन के अंदर वाइटामिन किन किन स्टेजेस में ज़रूरी होते हैं. वुमेन जो है वो अपनी पूरी तमाम लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हैं. प्री मेनोपॉजल स्टेज होती है, प्री मेंस्ट्रुएशन स्टेज होती है, फिर मेंस्ट्रुएशन स्टेज होती है, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती हैं. तो हर स्टेज में डिफरेंट वाइटामिन की ज़रूरत होती है. और इसके अलावा हम बेहतर यही है कि उन वाइटामिन को फूड से हासिल किया जाए. लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे वाइटामिन हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो उनको फुलफिल करने के लिए वाइटामिन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं. नेक्स्ट, सबसे पहले हम बताएंगे विटामिन डी. विटामिन डी एक्चुअली जो है सनशाइन विटामिन कहलाता है. इसको सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सपोजर ऑफ सनलाइट से हासिल होता है, और इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर बोन की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल अदा करता है. इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कोई जख्म हो जाए उसको रिड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सकती है. इसके अलावा इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को तमाम बीमारियों से महफूज रखने के लिए. जो सेल्स हमारी बॉडी में काम करते हैं उनको ये बनाता है. विटामिन डी की किन किन खवातीन में ज़रूरत होती है? तकरीबन तमाम खवातीन में विटामिन डी की ज़रूरत होती है. मेनली वो मैन जो कि जिनका एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पे नहीं हो पाता, उनके लिए, या फिर वो वुमेन जिनकी ग़िज़ा में विटामिन डी की फूड शामिल नहीं होते, उनके लिए. और इसके अलावा जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, जिनके अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो चुकी होती है अपनी ओल्ड एज की वजह से, उनके अंदर विटामिन डी सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. इसके अलावा अपनी बोन्स की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज में बोन्स की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए प्रेग्नेंट वुमेन भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. नेक्स्ट प्लीज. अब हमें ये पता होना चाहिए कि डेली हमारा विटामिन डी का इंटेक कितना होना चाहिए. तो प्री मेनोपॉजल वुमेन में डेली 500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी का इंटेक होना चाहिए. पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे का इंटेक होना चाहिए, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन डेली 2000 इंटरनेशनल यूनिट से एक्सेस ना हो, वरना टॉक्सिसिटी हो सकती है. यूजुअली विटामिन डी की ऐसी सप्लीमेंट सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें विटामिन डी के साथ कैल्शियम भी मौजूद हो, क्योंकि हमारी बॉडी में मेनली कैल्शियम और विटामिन डी एक साथ मिलकर काम करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. अब हम कुछ फूड्स के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, और अगर हम इन फूड्स को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें तो हम हाई एजुकेट क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी की हमारी बॉडी में मौजूद हो सकती है. सम सीरियल्स हैं, कुछ सीरियल्स हैं, ऑरेंज जूस है, एग योक है, मशरूम्स हैं, और चीज़ है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट प्लीज. विटामिन डी के बाद हम बात करेंगे कैल्शियम की. कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसको हम बोन बिल्डर कहते हैं. बोन बिल्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैल्शियम ही हमारे अंदर मेनली बोन मास फॉर्म करता है. हमारी बॉडी का टोटल वेट का 1% टोटल कैल्शियम होता है, और इसके अलावा कैल्शियम के साथ हम विटामिन डी भी लेते हैं, क्योंकि विटामिन डी एक्चुअली कैल्शियम को हमारी बॉडी फूड से एब्जॉर्ब करवाता है, और जिसकी वजह से कैल्शियम हमारी बॉडी में
फिर काम करता है। मसल्स की और ब्रेन की डेवलपमेंट में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क होता है उसको भी कम करता है कैल्शियम। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज है जिसके अंदर हमारे फूड के थ्रू हमें कैल्शियम मिल नहीं रहा होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कैल्शियम को हमारी बोन्स से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, और इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि वो टूट भी सकती हैं। और वुमेन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है बनिस्बत मैन के। इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के को प्रिवेंट करने के कैल्शियम का इंटेक वुमेन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन-किन ख़वातीन को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? कैल्शियम की मेनली ज़रूरत सबसे ज़्यादा टीन एज या यंग एज में होती है। फॉर एग्जाम्पल 9 टू 18 ईयर्स की ख़वातीन में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसमें हमें 1300 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम चाहिए होता है, क्योंकि इस एज में मेनली हमारे अंदर बोन मास की डेवलपमेंट हो रही होती है, और इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद अडल्ट वुमेन है, उनके अंदर 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम ईच डे चाहिए होता है। फिर मेनोपॉज जिनके अंदर वो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है, उनके अंदर बोन्स वीक हो जाती हैं, तो उनके अंदर 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का इंटेक ज़रूरी है। अगर हमारी डोज में 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा कैल्शियम है, तो उसको हमें चाहिए कि हम उसको 2 डोजेज़ में स्प्लिट करके लें पर डे के हिसाब से, ताकि एब्ज़ॉर्प्शन उसकी अच्छी हो सके। नेक्स्ट प्लीज़। मेनली जो सोर्स है कैल्शियम का वो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं। दूध से बनी हुई तमाम चीज़ें जैसे चीज़, बटर, योगर्ट, इनमें कैल्शियम प्रेज़ेंट होता है। इसके अलावा कुछ फूड सोर्सेज़ हैं जैसे पीज़ हैं, बीन्स हैं, ये फिग है, ऑरेंज जूसेज़ हैं, इन तमाम में भी कैल्शियम प्रेज़ेंट होता है। नेक्स्ट प्लीज़। अब हम बात करेंगे फिश ऑयल की। फिश ऑयल बेसिकली कहाँ से हासिल होता है? फिश ऑयल मेनली फिशेज़ से ही हासिल होता है, और जिन ख़वातीन के ग़िज़ा में फिश मेनली शामिल होती है, उनके अंदर फिश ऑयल की कमी नहीं होती। एक्चुअली फिश ऑयल हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं, और हार्ट की मसल्स को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, उनको प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, और ब्रेन की डेवलपमेंट में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। किन-किन ख़वातीन में फ़िश ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? वो वुमेन जो कि जिनकी ग़िज़ा में फ़िश शामिल नहीं होती, उनको फ़िश ऑयल की सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा वो वुमेन जिनको डिसीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उनको फ़िश ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर न्यूबॉर्न बेबीज़ की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी फ़िश ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो ओवरवेट वुमेन होती हैं, उनके अंदर जॉइंट की टेंडरनेस को कम करने के लिए हम फ़िश ऑयल की सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट की प्रॉपर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हमारी आईसाइट को इंक्रीज़ करता है, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन बी9। विटामिन बी9 को फोलेट और फॉलिक एसिड कहते हैं, और फॉलिक एसिड मेनली हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स का सबसे बेसिक यूनिट है डीएनए, उसके फॉर्मेशन में ये अहम किरदार अदा करता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड का इंटेक बिगिनिंग के 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बेबी की डेवलपमेंट अच्छी होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है, और लो बर्थ वेट को भी कम करता है, और प्रीमेच्योर बर्थ को प्रिवेंट करता है। किन-किन ख़वातीन में फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? मेनली जो है प्रेगनेंसी के दौरान शुरू के 3 महीनों में फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि न्यूबॉर्न बेबीज़ की बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। इसकी क्वांटिटी हमें कितनी ज़रूरत होती है? नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को 400 माइक्रोग्राम पर डे इनका इंटेक ज़रूरी है, और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर 400 टू 800 माइक्रोग्राम पर डे का इंटेक होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़। कुछ फूड सोर्सेज़ हैं जिनके थ्रू हम विटामिन डी फॉलिक एसिड को नेचुरली हासिल कर सकते हैं। इसमें कुछ हर्ब्स हैं जैसे एस्पैरागस है और ब्रोकोली है, कुछ फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, पपाया है, और इसके अलावा लेंटिल्स वगैरह से भी विटामिन बी9 फॉलिक एसिड को हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अब मैं बताऊँगी अबाउट आयरन। आयरन हमारी बॉडी के अंदर मेनली एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वुंड हीलिंग में मदद करता है। आयरन हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स की फॉर्मेशन करता है जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं।
तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा आयरन हमारी बॉडी के अंदर वुंड्स की हीलिंग करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि वुंड को हील करने में मदद करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में मदद करता है। कौन सी खवातीन को आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है? यूजुअली मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उस दौरान ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो आयरन का इंटेक बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में भी आयरन की इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो न्यूबॉर्न बेबीज की डेवलपमेंट में ब्लड फ्लो नॉर्मल हो सके। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? बेसिकली आयरन की कमी की वजह से हमारे हार्ट मसल्स को जो है बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ताकि ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में अच्छे से पहुंच सके। लेकिन इसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फटीग फील करती है। कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ अलामात हैं जो कि हमें बताते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिसके अंदर पेशेंट जो है बहुत ज्यादा वीकनेस फील करता है, बहुत ज्यादा थकन फील करता है, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से इस चीज को अवॉइड करने के लिए आयरन का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। किस कंसंट्रेशन में आयरन का डेली इंटेक जरूरी है? 19 टू 50 ईयर्स में 18 मिलीग्राम लेना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में 27 मिलीग्राम लेना चाहिए, और पोस्ट मेंस्ट्रुएशन में हमें 8 मिलीग्राम की जरूरत होती है, और जो बेस्ट फीडिंग वुमेन है उनको 9 मिलीग्राम का आयरन इंटेक जरूरी है। कुछ फूड्स हैं जिनके थ्रू हम आयरन का इंटेक कर सकते हैं। अगर हम इन फ्रूट्स को अपने नॉर्मल न्यूट्रिशन में शामिल कर लें तो आयरन की कमी नहीं होगी। सम फूड्स आर लाइक बीन्स है, मीट है, और एग्स हैं, और बीट रूट है। नेक्स्ट प्लीज। अब कुछ नॉर्मली फूड्स हैं जो कि हमारी जिंदगी में नॉर्मली शामिल होते हैं। इनके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी कौन कौन से विटामिन हासिल कर सकती है। फॉर एग्जांपल एप्पल के जरिए से हमें विटामिन सी हासिल होता है। पिस्ताचियो में आयरन, मैंगनीज एंड पोटेशियम मौजूद होता है। फिग में फास्फोरस एंड मैंगनीज मौजूद होता है। स्वीट पोटैटो में विटामिन ए मौजूद होता है। नेक्स्ट प्लीज। होपफुली आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि विटामिन वुमेन्स की लाइफ में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको, और हमें ये भी पता चल गया है कि हमें कितने विटामिन की कंसंट्रेशन चाहिए होती है अपनी डेली इंटेक में। कमिंग डेज में शिमोस फार्मा जो है उसके प्लेटफॉर्म पे शिमोस फार्मा की जो है शी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे शिमोस फार्मा की मल्टीविटामिन अवेलेबल होंगी, और हम आपको इसके बारे में पूरी गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। Thank you, Ms. Sadaf. You have shared a lot of informative sessions with all of us. Thank you so much. Without further delay, I would like Ms. Sada. As we know, pharmacists are the drug experts, and female pharmacists can serve the female community in a better way by giving the knowledge of the proper use of the medicine. So in this manner, I would like to invite Ms. Sada to share her point of view on it. She is a graduate from the DUHS, currently doing masters in pharmacy practice from Malaysian University. Please welcome Ms. Nada Naeem. Please, over to you, Ms. Nada. Assalamu alaikum, everyone. Is my voice audible? Yes, ma'am. Okay, thank you. Just give me 2 minutes. I'm going to share my slides. Okay, the topic of our discussion today is the female pharmacist, a helping hand for female community. I myself, Nada Naeem, and the objectives are: what is She Pharmacy bringing to female pharmacists, and how it is going to serve its female pharmacist targeted community? She Pharmacy is basically an online digital-oriented pharmacy system. She Pharmacy is strategically planned to give benefits to the community. But how can She Pharmacy do this? We will provide awareness through standardized services as well as evidence-based practice and activities of pharmacists in collaboration with other healthcare professionals. With its online pharmacy platform, She Pharmacy aims to empower female pharmacists in going beyond traditional duties by not only delivering medications to patients' doorsteps, but also raising recognition of their condition and prescribing information. Technology is changing the patient journey.
associate professor named Temuchi Angus said that digital health is mainstream, accelerated by the COVID-19 pandemic and telehealth. We need to catch up with digital resources, not stay tied to legacy approaches. Digital health needs digital pharmacists. Incorporation of technology into all facets of pharmacy practice. She Pharmacy would be a digital platform that would support pharmacists, particularly female pharmacists, in advancing their role as drug expert. She Pharmacy is an initiative to assess all female pharmacists who can serve the community with their talents and knowledge while staying at home. The main objective of She Pharmacy is to support her empowerment initiative. Our goal is to give such females who are eager to advance in their pharmacy career and have past professional expertise a fair and professional platform. In fact, our exact motive to use female pharmacists for the community's advancement and welfare, as well as to increase the education and awareness of patients towards their disease and medicine. How it is going to serve its female pharmacists targeted community? Female pharmacists can get opportunity to share their knowledge, expertise, and experience with the community while working from home. Community-based female pharmacists can provide the healthcare advice to women, and that they can play an important role in women's healthcare. Women pharmacists working in community setup can help such women of the community and can also spread the awareness, frankly, among the women of childbearing age about their hygiene, the immunization, the pre and postnatal care, nutrition and family planning, and services available to them at nearby healthcare centers. As we know that women have often assumed the responsibility for the health of the whole family, they usually search for information about like their children medication, making sure that parents have the right understanding of their children medication. Pharmacists can help them by simplifying the information. That is how they can do that. They can support that pre-pregnancy support. Pharmacists can explain the contradictions to medicines in pregnancy, offer medication review during pregnancy and lactation, and recommend prenatal vitamins. Parenthood, the correct use of medicines while breastfeeding, administration of the medicine to their children, and how to store the medicine safely. Menopause and how it affects the women's bodies. Pharmacists can help women to understand their and their female family members' hormonal changes, to differentiate between the abnormal and normal symptoms, and to help manage this important stage in women's life as smoothly as possible. Women commonly experience different menopausal symptoms such as hot flushes, mood swings, sleep disturbance, painful joint, among others. Conclusion: the community is at risk for poor health due to the inadequate health management system, poorly enforced government regulation, and the influence of medical store, pharmaceutical, and doctor mafias, which prevent pharmacists from fulfilling their primary responsibilities and improving society's level of health maintenance. Since pharmacists can serve at the front lines of the healthcare system, it is imperative that they take on the role of female pharmacists in order to recommend and intervene with medication. She Pharmacy will offer the platform for community that will specifically receive the services like awareness, education related to the medicine management, and drug awareness. These are the references. Any questions are highly encouraged to answer. Thank you. Thank you so much, Ms. Nada, for your presentation. Now it's time for the question and answer sessions. If anyone asks any query, please welcome the questions. Anyone want to ask something? If you have any question, you can ask, please, and through a microphone or the chat box. Otherwise, we will end the session. Overall, it was very informative session from all of our team members. Thank you so much, Ms. Sada. Thank you so much, Ms. Nayam. Thank you so much, Ms. Sada, for your informative presentations. Anyone have any query?
Ms. Amtul, can you please explain one question in the checkbox? You can order us by the WhatsApp number or Facebook page. Our team member will reply you in a very short manner, as well as they receive your messages. So we will forward your order further. You can order us. She Pharmacy is offering her online services by providing the how to take the medicine, what are the community services for the patients. She guides you completely about all of the aspects of the medicines, what are the interactions of the medicines, how to take the medicines, and overall guide you all of the aspects of the medicines, how you take the medicines, at what time you have to take the medicine. In all aspects, Pharmacy members will guide you. All of the team members are very informative. They have all of the knowledge about the medicines. All of us can guide us. We have community pharmacist team, we have the clinical pharmacist team. Both of us will guide you in a proper manner. Thank you so much. In the end, I would like to thank you to all of you. It was a very pleasure to having you all. For now, we sign out, but we will continue and arrange sessions to go more the pharmacy further, inshallah. Thank you so much. I would like to end the session.